Hare Krishna. On behalf of our beloved Guru Maharaj, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, we welcome you to Sri Radha Gopinath Mandir. First of all, I would like to welcome our special guests. Of course, Yadubar Prabhu is no longer a guest. He is a resident of Radha Gopinath Temple. But still, let us show our gratitude to him and Vishaka Prabhu for gracing us with their merciful presence. We also have my dear godbrother Shauri Prabhu, wonderful, wonderful Vaishnava devotee, one of the great book distributors of ISKCON's history. He is here with his very auspicious wife, Shamalasaki Devi. Shamalasaki Devi is here. Can you stand up wherever you are, please? Harivo. These are two most sincere, exemplary grihastas. They have wonderful sadhana, wonderful good qualities, a beautiful son, Govinda. Yes? What is his name? Govinda, yes. And most of all, they have a very, very burning desire to assist Prabhupada's mission and the worldwide assembly of Vaishnavas. And I believe they are, for this purpose, moving from North Carolina to Sri Navadvip Mayapur Dham. Let us welcome them to Sri Radha Gopinath. We also have with us from Sri Braj Bhumi three of the most illustrious and wonderful Brijavasi devotees. These devotees are so intimately a part of our family, and by their causeless mercy we are also an intimate part of their family. On the top of the highest mountain of Sri Nanda Gram is the Nanda Baba Mandir, which is the eternal residence of Nanda, Yashoda, Sri Krishna and Balaram. It is the place that Krishna Balaram resided for the latter part of their Leelas, when they manifested their Leela 5,000 years ago. And in the Aprakata Leela, the Astakaliya Leela, Sri Krishna Balaram are eternally residing on that mountain. Sri Chaitanya Mahaprabhu worshipped those deities there. They are held most dearly to all the hearts of Vaishnavas. And we have here today two of the prominent Goswamis, who are the pujaris, who render personal services to those deities, father and son. And a few years ago they came to our Mayapur Yatra with us.
And in a few days, they're going to bless us by joining us for the South Indian Yatra. These are wonderful, true Brijavasis. And I'm so grateful that they have come today to Sri Radha Gopinath Temple. Let us, with very thankful hearts, much enthusiasm, let us welcome them in such a way that their family members in Nandagram can hear. Let us welcome Rameshchandra Goswami and his good son Shushil Goswami. And one of my very closest friends, I say that due to my audacity. Actually, I should be striving to be a particle of dust at his lotus feet. One of the most faithful and dear disciples of Sri Ramesh Baba of Man Mandir in Barsana. Wonderful speaker, incredible kirtan player, and wonderful flute player also. Very hardworking, very humble, totally dedicated soul. And he's opened his heart to give so much love to all of Radha Gopinath's devotees. And I'm just so grateful that he has come today. Let us very enthusiastically welcome Narasingha Maharaj. And we also have with us one of Srila Prabhupada's most intimate, confidential associates. That person who traveled around the world with Srila Prabhupada several times for several years as his personal secretary, helping him in many of the most intimate leelas of ISKCON's history. He helped open the second center of ISKCON in San Francisco, and immediately through the mantra rock dance just made the Hare Krishna movement and Srila Prabhupada famous in a matter of days. Prabhupada sent he and 5 others to London. They had no contacts. They lived very simply, practically in poverty because they had nothing. But in a matter of months, the Beatles were chanting Hare Krishna. George Harrison became a devotee. They helped make record albums and records that were selling by the tens and thousands. They started a temple for Prabhupada. And Srila Prabhupada was so proud, so proud. Srila Prabhupada hundreds of times all over the world would say that what even the most erudite sannyasis could not do, establishing Krishna Bhakti in London, these 6 grihastas have done it in such a substantial way. So Srila Prabhupada also brought them to India when he wanted to establish the Hare Krishna movement here. They started in such a small way, and gradually there were tens and thousands of people at Cross Maidan hearing from Srila Prabhupada's lotus lips. Prabhupada wanted to go to Moscow, but it seemed impossible to get the visa. But he asked his one trusted secretary, and within a day he had the visa, and he was on the plane to Moscow with Srila Prabhupada.
Yes, he's a legend in his own time. Let us welcome His Grace, Shyam Sundar Prabhu, back to Radha Gopinath. Tomorrow is the disappearance day of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. Shyam Sundar Prabhu wanted to speak something, so it's good if he speaks before I put all of you to sleep. And then I will speak something for a few minutes about Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, our beloved Param Guru. And then we will ask Nrsimha Baba and Rameshchandra Goswami to speak some words. Thank you very much. Thank you. Hare Krishna. Everyone got their handkerchiefs out. I kind of, yesterday, well, first I should say thank you so much for being here again. I miss you all so much. Seeing you all again is, what can I say? That's why I say you better bring this. And all the new ones, new faces here, thank you so much for being here. Yesterday I kind of missed the bus. Something happened. I couldn't make it to the affair in Vyas Puja, and I'd already written something for my dear friend Radhanath Swami. So I'd like to, if you'll bear with me, read some words of praise to my dear friend. If I can find out where does it start? There it is. I know that speaking in this way about Radhanath in his presence is rather embarrassing for him, because in his humility he always thinks of me as his senior god brother, and he always offers me so much respect, sometimes so much that I often wonder, is this guy blind or what? But I've come to realize that Radhanath Swami sees everyone as more worthy than himself. In fact, he said to me many times, oh, you know, Shyam Sundar, I didn't sleep well last night, or my head is so bothered with worry because I thought how I should have said something or done something for someone, to this or that person, to help them. That I'm so self-centered, I'm such a self-centered fool that I'm only thinking of myself. He thinks like that. And this is his quality as a self-realized Vaishnava, that he's always willing to offer respects to others, and he's always humble like the blade of grass. As Radhanath pointed out, maybe I was one of the blessed few who got to live and laugh up close and personal with Srila Prabhupada year after year, like Yadavara. So we both got a pretty good idea of what a self-realized soul, about the mannerisms and activities of a self-realized soul, how he should look, how he should act, what he should say. And I don't need to, you don't need me to tell you this, but Radhanath Swami is the real thing. He is the real thing. He reminds me of Srila Prabhupada in his every thought and action. I'm so doubly blessed
that even in the absence of my beloved spiritual master, Srila Prabhupada is so clearly visible in the activities and personalities of those few in my old age that I can truly call friends. And what is that friend? Radhanath Swami is the best of all friends. He wishes me well without any condition, like a father or a mother. And such deep friendship doesn't need so many words. There's a kind of knowing, a shared knowing. Those words scarcely need to be exchanged. I always know that wherever he is, Radhanath Swami is doing Krishna's work in the highest possible, purest way. And though I miss him terribly, I always feel him wherever I am. His calming look and his joking mood, and that soon enough our paths will cross somewhere in some delightful way. Radhanath, you are like a touchstone to me. Every good idea I may have seems to emanate somehow from you. You're like my alter ego. And such a friend on this level is so rare and so precious. Your friendship is the sum success. If there's any success in my life, your friendship is the sum success of my life. I guess we seem to groove together in a special way, at least like no one else I've ever hung out with. We like the same things, same jokes. Even in that vast landscape of America, the place where you were born and raised and where your father still lives is just a few miles from my daughter Saraswati's place in Chicago. You seem to show up, or I seem to show up wherever you are, somehow, quite often unannounced. There's so many examples, so many recollections of the wonderful times that we've shared. For example, it was only earlier this year, if you remember. It seems like 10 years ago, but the wonderful 2 months we spent here preparing for this Prabhupada festival in Cross Maidan. That was one of the most intense displays of Krishna's mercy I've ever experienced, and it was by your mercy that it was able to happen. Prabhuji, you are my dearmost friend, and one like no other that I've ever had. And you are holding the light for us both as we stumble ahead in the darkness. Bless the day that you appeared to be my living companion and soulmate, and the companion, guide, and friend of so many fortunate souls who travel with us on Prabhupada's ultimate adventure. Thank you very much. By the way, there was a phone call late last night from one of your biggest fans, Anil Agarwal, in London. He called after you were resting, and he requested that I offer to you on his behalf his most humble obeisances, and he expresses also a keen desire for you to lead him ever deeper into devotional service. He told me that you are the most significant spiritual force in his life, and he is eternally grateful.
Thank you, Shyam Sundar Prabhu. Whatever kind words you spoke is only the manifestation of your benevolent and forgiving nature upon an insignificant soul as myself. Tomorrow is a very important day for all of us. The disappearance day of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. We honor the previous acharyas because it is their blessings, their mercy, that is all we are made of. In our Brahma, Madhva, Gaudiya Sampradaya, the conception of the most intimate form of bhakti, of being the servant of the servant, of Sri Radha Gopinath in Sri Braj Dham, Vrindavan, has manifested. To this material world of birth and death, a world that people reside only because of their envy of God. From that seed of envy has developed the weeds of lust, anger, pride, greed, illusion. Impelled by these enemies, we act under the dictations of the three modes of material nature and engage in works that further bind us in illusion. And the seed of all these anarthas is that we have forgotten our eternal relationship as the servants of Krishna. But Krishna is so kind that he descends into this world again and again and again to invite us back home, back to Godhead. At the very beginning of creation, Lord Krishna revealed the truth to Brahma. In fact, he revealed Goloka Vrindavan to Sri Brahma. Brahma taught this to Narada. Vyas, compiler of the Vedic literatures. Later on, Madhvacharya. He received this knowledge from Srila Vyasadeva. And it was passed down through disciplic succession. Madhavendra Puri, Ishwara Puri. And then Lord Chaitanya appeared. Who is Lord Chaitanya? Radha Krishna Pranaya Vikratir Ladini Shakti Rasmat Ekat Manava Bhuvi Baba Deha Vidam Kathao Tao
Chaitanyakyam prakatam aduna tapayam chaityamaptam Radha bhava dhuti subalitam nomi Krishna swarupam. The absolute truth is one. But that absolute truth is eternally manifesting two forms as Radha and Krishna for the purpose of intimate, ecstatic pastimes of pure love. But that Radha and Krishna have again become one in the form of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Lord Chaitanya is Krishna with the golden complexion and the Mahabhav, the supreme love of Sri Radharani. But he appeared as an acharya to teach by his example. He humbly served his Gurudev, and on the order of his Gurudev, he established the Nam Sankirtan movement. And began to spread it throughout the world. In fact, Lord Chaitanya proclaims that in every town and village throughout this planet, Krishna's holy name should be chanted. Why? Because there is no other power in all of creation that can awaken love of God within the heart in this age of Kali than the holy name of God. Aho bata swapacho togariyam yaj jivakre vartate namatubhyam. Even if one is born in a family of dog eaters, chandala, if he chants the holy names of the Lord sincerely, that person can not only deliver himself, but deliver the whole world. But Kapila Dev describes in this sloka that if one is Brahman by birth with all the 25 qualifications, if he's not sincerely chanting the holy name, he cannot deliver even himself, what to speak of anyone else. Lord Chaitanya established as the Namacharya of his movement Srila Thakur Haridas, who was from an outcast family, just to show that the power of the holy name has no limitations. Nam Namakari Bahuda Nija Sarva Shakti. All the Shakti, mercy of the Lord is within the name. And he passed down this mission of compassion to Sri Rupa Goswami, Sri Raghunath Das Goswami, Sri Sanatan Goswami, Gopal Bhatta Goswami, Raghunath Bhatt Goswami, and Jiva Goswami. He empowered them to reveal the glories of Vrindavan through transcendental literatures and through the example of their lives. And through them, this great line of love has descended. Kaviraj Krishna Das Goswami, Vishwanath Narottam Das Thakur, Vishwanath Chakrabarti Thakur, Baladev Vidyabhushan. These great acharyas, how they have established Vrindavan as the highest conception of spiritual reality, and pure devotional service as the limit of perfection. Jagannath Das Babaji Maharaj. But over time, in the age of Kali, like anything in this material world, people misuse something good, exploit it.
and Vaishnavism became just a sectarian way of manifesting their own exploitation and ego to a large extent. Gaudiya Vaishnavism fell into the hands of unscrupulous persons, and decent people did not want to come near it, except for a few great acharyas and babas who were living in Vrindavan and Navadvip and other holy places. But it was that fearless man, Bhaktivinoda Thakur, who risked his life to establish the pure teachings of Lord Chaitanya as it is for the world. His tireless pen composed volumes and volumes and volumes of books, translations of original Vedic literatures and literatures of the Goswamis. He established printing presses. Namhat, although he was a grihastha with 10 children and government services, still he had all the time that could possibly be required to reach millions of people's hearts, transform them. He wrote thousands of beautiful bhajans and songs, poems, books, magazines, periodicals. No human being can do this. But he prayed. He prayed to Lord Chaitanya that I need help. Let a ray of Vishnu come as my son. Krishna answered his prayer. And in Sri Purushottam Kshetra, Jagannath Puri, an eternal associate of Sri Goloka Vrindavan, appeared within this world as the son of Bhaktivinoda Thakur and Bhagavati Devi. He was given the name Bimala Prasad. But later on was the great Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. He took Bhaktivinoda Thakur's mission as his life and soul. To make Krishna consciousness, Krishna Bhakti, accessible, appealing to even the common people of this world in the modern age of Kali, without compromising anything of essence. On the order of Bhaktivinoda Thakur, and by the faith of his own heart, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur accepted initiation from the crest jewel of all renunciates, Gaur Kishore Das Babaji Maharaj. Namo Gaura Kishoraya. He was, Gaur Kishore Das Babaji in this beautiful pranam prayer is described as one who was the very personification of renunciation. When he was living in Vrindavan, he would fast, and sometimes for his meal, he would just take mud from the Jamuna and eat it. He required nothing more. But he was always absorbed in the deepest ecstasies of vipralamba, or separation from Sri Radha and Krishna. Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur took the inspiration as well as initiation from Gaur Kishore Das Babaji, but made his life and soul the mission of Bhaktivinoda Thakur. With only the help of a couple well-wishers
He established Gaudiya Math in Ultadanga Junction Road in Calcutta. He made his headquarters in a little hut, a kutir in Sri Mayapur Dham, and began to preach. And soon, an amazing thing took place. The cream of society was coming to him. Young people, scholars of Sanskrit, very, very serious people. They heard his message, which was with no compromise, and they surrendered their lives, one after another after another. And he trained them. He trained them in philosophy. He trained them in proper behavior, in etiquette, and essentially trained them in praying, in the loving service of the Lord. Within a short time, he had an army of undefeatable preachers of Vrindavan Dharma, of the highest truths, as Sri Chaitanya Mahaprabhu has taught. Some people called him Singha Guru because he had a memory where after hearing anything, he would never forget. In fact, in his early years, he was one of the world's greatest authorities of astrology. And even before he went to college, one very prominent university offered him the high seat of the department head of the entire department of astrology. He was so learned. He was getting so many awards. But then he was thinking that if I go to college, people will expect so many material things of me. And then they'll want me to get married. So he dropped out of college. And he dedicated his full-time energy only in helping his father's mission. Singha Guru. He risked his life to abolish both Mayavad and Sahajya mentality. Mayavad means those persons who misinterpret the Vedas to consider that the ultimate perfection is to become one with God. And that ultimately God's form, His personality, His pastimes, His devotees, they are all temporary manifestations within the mode of goodness. By hearing the Lord's pastimes, by chanting the Lord's names, by studying Vedanta and discriminating between matter and spirit, ultimately we can attain Brahman realization and go beyond the Leela of the Lord. They declare that Krishna's form, His name, His pastimes, His abode are all Maya. This philosophy breaks the heart of Vaishnavas. So he established very strongly. And when Mayavadis would see him in the street, they would run away because he would challenge them. And according to the Shastra, he could not be defeated. Not simply because of his charisma, but because he was empowered to reveal the truth. And those who take Krishna's Leela cheaply, thinking you could just jump into the Ras Leela without properly purifying your heart through sadhana, through seva. He exposed such persons.
Yes, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur was a powerful personality. And he wanted to use the technologies of this world to spread Krishna's glories. He established many printing presses. He used automobiles. He used anything that could be used in Krishna's service that came within his realm, he used it. And the result, tens and thousands, hundreds and thousands of people all over India, their lives were transformed. He established 64 mutts. But very early, in the beginning days, he met one young man who was just recently married and had a child named Abhay Charan. On that rooftop in Ultadunka Junction Road, Abhay bowed down to him and he gave him an instruction. Without even knowing who this man was, Prabhupada was receiving a lifetime order from him. You are an intelligent young man. Take this message of Lord Chaitanya and spread it throughout the world. There is no greater need than Krishna consciousness. Everything else is illusion. Everything else is temporary. All the solutions that people are trying to make to solve the problems of this world, whether they be political, social, economical, they're all irrelevant to the highest reality. The awakening of the soul's love for God is the only need in this world, essentially. And about 10 years after this meeting, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur initiated this personality, who took the message of Bhaktisiddhanta Saraswati as his life and soul, and for the purpose of fulfilling that mission, he accepted sannyas and became A.C. Bhaktivedanta Swami, our beloved Srila Prabhupada. Residing in Vrindavan, Radha Damodar temple for 6 years, on his Guru's order, he traveled around the world over 13 times, spreading the glories of the holy name. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur had such illustrious followers who loved him so dearly. There's one nice story that I'm very fond of that I would like to tell today, showing the character of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, the character of his heart. Yes, he was such an erudite, powerful, uncompromising scholar. It is said that great souls could be hard like a thunderbolt, but their heart is always soft like a rose. He once sent some of his disciples to a very remote place of India to try to establish preaching of Bhagavad Dharma there. They went. They didn't know anyone. They had no support. But they had faith in their Guru Maharaj's order and enthusiasm to carry it out. Actually, that is all that's required for anyone to be empowered, whoever we may be. Mukam karoti vachalam bhangum langayati giri.
Yat kripatamaham bande Sri Gurum Dinataranam. If one has faith in the order of Guru and the enthusiasm to carry it out, even if you're blind, you can see the stars in the sky. Even if you're lame, you can cross over the mountains. And even if you're dumb, you can speak eloquent poetry. Because through Shraddha, faith, and enthusiasm to serve, Krishna, through Guru Parampara, can empower us to do amazing things. It's not a question of whether we have high degrees at universities. It's not a question if we're Sanskrit scholars. It's not a question if we're born of high Brahmin family. It's not a question if we have young, healthy bodies. It's only a question of causes mercy. Srila Prabhupada, Anjaladuta, he was 70 years old. He was having heart attacks. He was totally poverty-stricken materially, and he was on his way to the West. He was praying to his Guru Maharaj. I'm simply trying to fulfill your order with faith. That's all. I have nothing else. I have faith in the order of my Guru Maharaj, and I'm willing to carry it out. And see what he has done. He prayed to Krishna, just let me be your puppet and make me dance as you want me to dance. So these devotees went to the remote part of India and they preached. And thousands of people were becoming Vaishnavas. Within a short time, they had such a congregation, and brahmacharis were joining. They asked for the blessings of Guru Maharaj to start a temple. And in just a matter of months, practically, they built a temple. A beautiful temple. And they invited Guru Maharaj to come and install the deities. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati was on a train, on his way. They were so excited. The temple was complete, beautiful domes. And there were so many people that were going to greet Guru Maharaj with kirtan at the railway station, and then another group of people that would greet him at the site of the temple. And you know how it is. Something about our parampara. Whenever there's a big event, the majority of things left to be done are on the last day. So they were working so hard. They were just running here and there, arranging mass prasad distribution and beautiful decorations and all the paraphernalia for the prana pratishta, the installation of the deity, and welcoming dignitaries. And in the intense devotional fervor of preparing everything for Srila Prabhupada's arrival, there was one brahmachari, and he was found to be having improper dealings with a neighboring girl. And one of the senior devotees harshly chastised him for doing this. This brahmachari felt so guilty. He was mortified. In the middle of the night, he packed whatever little belongings he had. Without saying anything to anyone, he disappeared.
The next morning, they found he was gone. The devotees were feeling bad that they were harsh on him. But at the same time, Guru Maharaj is coming in a matter of hours. We have to do our work. And they did their work excellently. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur arrived with a wonderful kirtan. All the dignitaries and politicians of that area were there to greet him. They brought him to the land, and when he saw all the people chanting with tilak, with Vaishnav robes, kanti mala, with sincere faith and emotion, chanting the holy names, and he saw the beautiful temple freshly painted, and the deities were there, and mass prasad distribution was arranged. He was very happy. Everything they did was only to please him, and he expressed his great pleasure that you came here with nothing, and now see, you have transformed so many thousands of people's hearts and lives, and you've built this beautiful temple for the Lord to reside. Everyone was in bliss. Guru Maharaj is pleased with our service. Suddenly, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur asked, "Where is this brahmachari?" One of the leaders explained what happened. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur became very sad. With an emotional voice, he spoke. "It is so difficult. It is so difficult to bring one person from the clutches of the illusory energy Maya into the realm of devotion. One person came to us, and we sent him back to the material world. All of these people, all of these arrangements, and all of these buildings that you have created do not mean as much to me as that one devotee." The devotees' hearts were broken. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati became utterly silent after speaking these words. All the leaders met. "We failed. If we don't please our Guru Maharaj, what is the use of all this? We have to find this brahmachari. We must find him." But he could have gone anywhere. They were thinking, where could he have gone? But then one brahmachari, Hayagriva Prabhu, who later became His Divine Grace Bhakti Dayata Madhava Maharaj, he said, "I know where he must be." Some time back, one of our devotees broke his watch, and this brahmachari immediately fixed it. So he knows how to fix watches. He left the brahmachari ashram with nothing to survive. He's probably working at a watch repair store. So this was their first priority over everything else. They went to every watch repair shop possibly that they could find. They could find him nowhere until finally, one watch repairman, when hearing the description, he said, "Oh, he just came. He's in the back room fixing a watch." So the leaders of the mutt went into that back room, and there this brahmachari, he saw them and cried. He cried and called out, "I was praying to Krishna to save me.
Ever since I left the brahmachari ashram, I have been totally miserable. I want to come back, but I'm so ashamed I could not come back. I've been praying to Krishna to give me the association of devotees again. And the devotee said, come back. Guru Maharaj wants you to come back. He returned, and it was a glorious, joyful installation ceremony. And this particular brahmachari, for the rest of his life, he would tell this story about the glorious compassion and mercy of his Guru Maharaj, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. In this regard, I would like to read to you some of the final instructions that Saraswati Thakur Prabhupada has given to all of us. In October of 1936, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur went to Jagannath Puri from Calcutta. At the Chatak Parvat, he arranged a wonderful festival for Govardhan Puja, Annakuta. He preached and had his devotees electrified with his mercy. One day, sitting as Bhajan Kutir, he told the devotees, and this is quotation, please listen very carefully. Everything that I will be reading are the words of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, his final message to all the world, and have critical importance to all of our lives. He spoke, all the residents of the Math should always be engaged in the service of Sri Hari, Guru, and Vaishnava. They should always be engaged in hearing Hari Katha and discussing Hari Katha. If one becomes averse to Hari Katha and Hari Seva, then one will again be entangled by one's material desires. When he speaks about being averse, this also includes being negligent. We may say that we like Hari Katha and Hari Seva, but if we are not regularly practicing it, he explains what will take place. One will be entangled by one's material desires. Then one's time will be spent in gossiping, criticizing others, fighting with others, and gratifying one's senses. He's talking to the brahmacharis. He's talking to the sannyasis. He's talking to the whole congregation. No one is exempt of this principle. He's giving a very strong and vital warning to all of us. Srila Saraswati Thakur Prabhupada continues, if the residents of the Math do not understand that Vaishnava Seva is the most beneficial thing
then they will not make progress in the realm of devotion. One has to cultivate one's Krishna consciousness by sincerely serving the Vaishnavas and by endeavoring to please the Vaishnavas with body, mind, and soul. By the petition of a Vaishnava, merciful Krishna will give his mercy to the sinful soul. This we have to remember all the time. This we have to remember all the time. Let us repeat. By the petition of a Vaishnava, merciful Krishna will give his mercy to the sinful soul. He continues. If a godbrother falls from the platform of service to Hari, Guru, and Vaishnava, then you should think that your own brother is falling down. Then you have to openly advise him about Hari Bhajan and nicely make him understand the situation. Sing the beneficial message of Guru and Gauranga to him. If you merely comment on his downfall, then you are not his well-wisher. You have to be merciful to him by talking to him about the Lord. By doing this, you will benefit yourself as well as him, and your goal of living in the mat will be accomplished. We are living together to help each other serve the Lord. We will not live in this world very long. If we can die while continuously doing Hari Kirtan, then our birth will be successful. We have not come to this world to be carpenters, to deal with wood and stone. We are only carriers of the message of Sri Chaitanya Dev. It was during this time that our beloved Param Guru entered into his pastime of illness, serious illness. They brought top doctors from Calcutta, but nothing seemed to be improving his health. He decided to return to Calcutta. On December 7th, 1936, a huge crowd of devotees were waiting for him at the Howrah station. Illustrious personalities from all sectors of society came to greet him. In the Bagh Bazaar Gaudiya Math, Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati told the assembled devotees, one should not make many disciples. He had tens and thousands of disciples. But hear from him. What was the feeling of his heart? I have not made any disciples. They are all my gurus. I learned something from all of them. May they give me the opportunity to follow the example of their pure devotion. This is my prayer. On December 23rd, he called his dear disciples and well-wishers close to him to give his final instructions.
all of you, please preach about Sri Rupa and Sri Raghunath with great enthusiasm. The supreme goal of all our desire, the supreme goal of all of our desire is to become specks of dust at the lotus feet of the followers of Sri Rupa Goswami. All of you remain united in the shelter of the Ashraya Vigraha in order to satisfy the transcendental senses of the supreme entity of non-dual knowledge. All of you somehow live simply in this temporary world with the single goal of serving the Lord. Please do not give up your devotional service in spite of hundreds of dangers, insults, or persecutions. Please do not be discouraged by seeing that most people of the world are not listening to the transcendental topics of devotional service. Please do not give up Shravanam Kirtanam or Krishna Katha, which is your own bhajan and your sole property. Please always chant the name of the Lord, being humbler than a blade of grass and more tolerant than a tree. We only cherish one desire in our hearts: to sacrifice this body, which is only a lump of matter, in the fire of the Sankirtan Yajna of Lord Sri Krishna Chaitanya and his associates. Please listen carefully. We do not wish to be heroes by dint of our real identity of life. We do not wish to be heroes by dint of our action, bravery, or religiosity. But let this be our real identity, life after life, that we are specks of dust under the lotus feet of Sri Rupa Goswami. Let that mean everything to us. The Bhakti Vinod current will never be stemmed. Please take up the mission of preaching the desire of Bhakti Vinod with greater enthusiasm. There are many qualified and accomplished people among you. We have no other desire. Our only message is this: taking a blade of grass between my teeth, I fall down and pray again and again that I may become the dust at the feet of Rupa Goswami, birth after birth. Living in this world, one has to face many kinds of difficulties. It is not our job to try to remove those difficulties. Are you all attentive? Please listen very carefully. How many of you are facing difficulties? How many of you are not facing difficulties? If you are facing difficulties, raise your arms and chant Hari Bol. Please listen carefully. Living in this world, one has to face many kinds of difficulties. It is not our job to try to remove those difficulties, nor should we become depressed by them. After these difficulties are gone,
what shall we gain? What will our eternal lives be? What will our eternal lives be? While staying here, we should have some idea of that. All the things that attract or repel us, what we want and what we do not want, we have to resolve these things in our minds. The more we distance ourselves from the lotus feet of Krishna, the more these things will draw us in. The joy of Krishna Seva can be realized when one is attracted to his divine name after the transcendental happiness and misery of this world. At present, the topic of Krishna is startling and perplexing to us. I will read again. At present, the topic of Krishna is startling and perplexing to us. The continuing events of our lives pose obstacles to the realization of our eternal fulfillment. Knowingly or unknowingly, all human beings are struggling to eliminate these. Our only need is to enter that realm of eternal fulfillment, transcending all duality. And then he concludes, we have no attachment or hostility toward anyone in this world. All arrangements of this world are temporary. Everyone has an indispensable need for the absolute truth. May all of you, with one goal and in harmony with each other, I will repeat, may all of you, and he's speaking to us, may all of you, with one goal and in harmony with each other, attain the right to serve the original Ashraya Vigraha. That is Srimati Radharani. Let the currents of thought of the followers of Sri Rupa flow in this world. May we never, under any circumstances, show antipathy towards the seven-tongued fire of Sri Krishna Sankirtan Yajna. If we have an increasing attachment for it, then our goals will be fulfilled. All of you, please, preach fearlessly about Sri Rupa and Sri Raghunath with great enthusiasm under the guidance of their followers. On December 31st, just hours before he departed from this world, he spoke these last words. Love and rupture both should have the same end in view. Srila Narottam Das Thakur lived by the concept of Sri Rupa and Sri Raghunath. We should also live our lives according to that concept. Then Srila Prabhupada told everyone, all of you who are present here, as well as those who are not present, please accept my blessings. Please remember that our only duty and religion is to propagate the service of the Lord and His devotees. At 5:30 a.m., Thursday, January 1st of 1937, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur entered into the eternal pastimes of Sri Sri Radha, Giridhari, and the eternal abode of Goloka, Vrindavan. All of the assembled devotees, their hearts were broken.
It was as if the entire world had become null and void. There was nothing but darkness and anguish in their hearts as they cried together. Soon the word spread in all directions that great Acharya, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, who was like the sun, illuminating all directions, had set in the horizon of their lives. After the various formalities were performed, they brought him by train to Sri Mayapur Dham, where they placed him in his samadhi at the Sri Chaitanya Mat. It was then that the devotees were being tested. What was their real love? Would they take these instructions that he gave as their life and soul, even in his absence? That is the test of our real love for Guru and Krishna. Love is not just a sentiment of the mind. Love is the surrender of the heart. After some years, there was fighting amongst even leaders of the Mat. There was disunity, and many great souls had to start their own institutions. Our beloved Guru Maharaj A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada this broke his heart into so many pieces, because his Guru Maharaj ordered all of them to remain united and spread the glories of Nam Sankirtan and Prema Bhakti throughout the world. But due to this disunity, there was a weakening. And some very powerful acharyas were spreading Krishna consciousness in India. But it was Lord Chaitanya's prediction and Bhaktisiddhanta Saraswati's order that the name of Krishna go all over the world. A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada he tried in every way possible to bring his godbrothers together to do this. But everyone had their mission and everyone was doing their service, and some were doing wonderful, glorious services. And none of them were able to give him any help. Therefore, he found himself all alone, with only 40 rupees, on a cargo ship called Jaladuta. And what was his mood? Praying to Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, his Guru Maharaj. I'm only going because you have ordered me to go, as an instrument of your compassion. Krishna. Prabhupada was playing Krishna.
I have faith in my Guru Maharaj's words. Please empower me to speak them. And it was that compassionate sacrifice that was the qualification for most all of us to take to the path of bhakti. But we should know that it was the order of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur that Srila Prabhupada acted upon. And Srila Prabhupada taught us that himself. On so many occasions he said, whatever I have done, I have not done. It has all been done by the mercy of my Guru Maharaj. My Guru Maharaj has done everything. We were speaking yesterday, Prabhupada, on his Vyas Puja address. In one place, he said, I have done nothing. All credit goes to my Guru Maharaj. He has empowered me. And all credit goes to all of you, my disciples, because you have worked so hard to make my Guru Maharaj's dream fulfilled. And there is a famous story, I believe it was in Seattle, Washington, where it was the appearance day of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. And the devotees, they were thinking Prabhupada is our Guru, and they felt somewhat removed from the importance of Param Guru. So Prabhupada announced to them there should be a nice festival for my Guru Maharaj. And they did something very simple. And Srila Prabhupada was very, very disappointed. Do you know who my Guru Maharaj was? He was a Vaikuntha man. What can I say? Srila Prabhupada was very disturbed. You are not properly honoring and appreciating the mercy of my Guru Maharaj? And Prabhupada personally went into the kitchen and cooked the entire feast with his own hands all day. Cooked a beautiful, magnificent feast of Mahaprasad. He offered the bhoga with his own loving hands to the photo of his Guru Maharaj. Gave lecture, wonderful kirtan, arti, because he wanted to teach all of the devotees of the International Society for Krishna Consciousness how essential it is to honor the previous acharyas, and especially to honor Srila Prabhupada's very life and soul. Srila Prabhupada was explaining that when things were very difficult and it seemed impossible, he was reading a commentary of Srila Vishwanath Chakravarti Thakur from Bhagavad Gita, where it said one must make the order of one's Guru one's life and soul. And this became one of the most powerful influences in Prabhupada's life. To make the order of his Guru Maharaj his life and soul. His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada is our life and soul. And his order is the all in all of our life. And to please him, we must develop that deep love and gratitude for his Guru Maharaj as well. So tomorrow, from 10 o'clock in the morning until noon, there will be nice bhajans and festival in honor of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. Then there will be Pushpanjali, Arti, and feast. And
You are all invited. I didn't ask the temple president's permission to invite you. During the announcements, they may uninvite you, but at least for now you are invited. It will be a glorious occasion. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Gopimanandi. Tomorrow at 7 o'clock in the morning, I will be departing for Tirupati to help arrange for all of you who are coming to our South India Yatra. At this time, I humbly request the illustrious Brijavasis who have come to bless us to speak some words their words will most certainly awaken Krishna Bhakti within our hearts. Rameshchandra Goswami Maharaj, Narasingha Maharaj, could you please both, could we make some space for them? बोल नंद के लाला की राधा रानी की वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पाद रेणम अभीक्षण सह यासाम हरि कथोदगीतम पनाति भुवनत्रयम। ब्रज गोपीन के चरण की वंदना करते हुए श्री राधा गोपीनाथ जी के चरणन में निवेदन करते हुए पूज्य पाद श्रीपाद राधा नाथ जी के सानिध्य में आप सभी भक्त बंधन के सम्मुख कुछ ब्रज रस पान करा रहे हैं। ये दो ध्वजा है। प्रथम बार हम श्री राधानाथ जी की यात्रा में मायापुर गए। हमने महाराज से निवेदन किया था कि आपकी यात्रा में भी ध्वजा चलनी चाहिए। हमारे रमेश बाबा की यात्रा में ध्वजा रहती है और ये ध्वजा है श्री राधा रानी के प्रेम की प्रतीक। महाराज ने कहा एक ध्वजा हमारे लिए बना करके देना, इसलिए यात्रा में हमने दो ध्वजा महाराज को बना करके वृंदावन में अर्पित की थी। अब यात्रा आपकी दक्षिण भारत में जा रही है, उसकी यात्रा के लिए पुनः ध्वजा हमने अर्पण की है। आशा है महाराज और सब भक्तवृंद इसको स्वीकार करेंगे। ये ध्वजा श्री राधा रानी के प्रेम की प्रतीक है। जो लोग भगवान के मंदिर में दर्शन करने के लिए नहीं जा सकते हैं, वो दूर से ही ध्वजा का दर्शन कर लेते हैं और उनकी उपस्थिति मान ली जाती है। कहते हैं गोपी प्रेम की ध्वजा। मंदिर बनता है काफी ऊंचा होता है और मंदिर के ऊपर बनती है शिखर और शिखर के ऊपर रहती है ध्वजा। तो ध्वजा सर्वोच्च है। हमारे नंदगाम में जब कोई भी उत्सव होता है
तो एक ध्वजा नंद राजा की तरफ से बरसाना जाती है, जो राधा रानी के चरणों में झुका दी जाती है। वो श्री श्याम सुंदर राधा रानी को नमन करते हैं, और जब उत्सव नंदगाम में होता है तो राधा रानी की ध्वजा आती है, जो श्री नंदलाल के चरणों में झुका दी जाती है। वो राधा रानी का प्रेम अर्पण है। तो ये ध्वजा कार्य है गोपी प्रेम की ध्वजा, जिन गोपाल किए बस अपने उर्धर श्याम भुजा। श्याम सुंदर के कंधे पर राधा रानी अपना हाथ रखती हैं और उनके मन को मोह लेती हैं। तो उनका जो प्रेम है यही ध्वजा है। यहाँ श्री राधा गोपीनाथ मंदिर में आकर के बिल्कुल नंद भवन की याद आ रही है। एक तो हमने श्री ललिता जी के हाथ में बीड़ा देखा, दर्शन करते हुए बीड़ा का दर्शन हुआ तो बिल्कुल नंद भवन की याद आई। ये वो बीड़ा है जिसकी भगवान श्याम सुंदर ने मथुरा में चले गए तब भी जो रो रो करके याद की। उद्धव से कहते हैं वो ब्रज का सा सुख कहा, यशोदा मैया मुझे जो पान का बीड़ा था उसको अपना चबा करके सर्वित पान को मेरे मुंह में चिड़ैया की तरह से उगल देती थी। जैसे चिड़िया होती है, चिड़िया चुप करके लाती है और अपने बच्चे के मुंह में खोल करके उसको पान करा देती है, उसी तरह से यशोदा मैया, इस पान में सुपारी होती है वो थोड़ी कठोर होती है, कहीं लाला का मुख जो है उनको चबाने में कोई श्रम न करना पड़े, इसलिए मैया पहले चबाती थी उसको, और श्याम सुंदर का मुख खोल करके जबरदस्ती उस पान के बीड़ा को उसके मुंह में उगल देती थी। तो श्याम सुंदर कहते हैं उस पान का जो सुख है उधो वो कहाँ है यहाँ, और तो सुख सरे यहाँ उदो झूठन प्रेम को सुख न यहाँ है। जो मैया का जो झूठन मिलता था, ब्रजवासियों का जो उच्छिष्ट मिलता था, वो यहाँ पर मथुरा में नहीं है। तो यहाँ देख करके उस बीड़ा को देख करके हमको नंद भवन की याद आई। बिल्कुल ऐसा लगा जैसे नंद भवन में ही दर्शन कर रहे हैं। दूसरी जो है यहाँ गवाक्ष में ये जो जंगला से जो बन रहे हैं आपके ऊपर, जिनमें सब भक्त वृंद दर्शन दे रहे हैं, तो उनको देख करके भी याद आई कि हमारे यहाँ गौचारण लीला होती है। गौचारण लीला में जब श्याम सुंदर गाय चला करके आते हैं, उनके अधरों पर वेणु होती है और अलकों में रेणु होती है, बालों में धूल भर जाती है। सभी गोपांगनाएं अपने अपने गवाक्षों में खड़े हो जाती हैं और श्याम सुंदर का जो सुबह से गए हुए हैं विरह में शरीर व्याप्त हो रहा है, उनको दर्शन करती हैं और उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करती हैं। हटक हटक गाय ठटक ठटक रही। गलियों में श्याम सुंदर जब जाते हैं तो रुक रुक करके चलते हैं, हटक हटक रुक रुक करके। ऊपर से ब्रजांगनाएं देखती है, उनको दर्शन करती है, उनकी छवि को निहारती है और हटक हटक गाय ठटक ठटक रही। गोकुल की गलियां जो है बड़ी सकरी है, बड़ी नैरो है। ज्यादा आगे गाय चलती है, पीछे ब्रज गोप चलते हैं। गोपाल अच्युतः, सबसे आगे गैया है, बीजे जो है उनके गोपाल हैं, और सबसे लास्ट में जो है वो अच्युत भगवान कृष्ण हैं। वो कहते हैं आगे कहीं भी चले जाओ, रखवाला तुम्हारे पीछे आ रहा है, चिंता मत करो। गोपाल अच्युतः चल रही है और ऊपर से ब्रज गोपिया कहती है ये श्याम सुंदर कभी गैयाओं को देख रहे हैं, कभी ग्वाल वालों को देख रहे हैं, और हमारी तरफ तो कोई कटाक्ष भी नहीं कर रहे, देखते ही नहीं है। तो अंत में उनके ऊपर में वो जो है कंद कली पुष्प कली, कुंद की कलियों को, चंपा की कलियों को, और उनके ऊपर में वो जो है प्रहार करती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई पत्थर मार रही हो। तो क्या कोई कुंद कली से कोई पत्थर लगेगा? और वो ऐसी वैसी कुंद कली चंपा कली नहीं है, उन तापे लिखे हैं 2 आखरी 2 अंक लिखे हैं, अपना संदेश लिखा है उनमें, और वो लिखती है उस संदेश में, हे श्याम सुंदर सुबह से हम बिछड़े हैं, कब मिलोगे। अपनी विरह व्यथा जो है उस कुंद कली चंप कली में वर्णन करती है, और श्याम सुंदर जिसके द्वार में खड़े होते हैं उसकी तरफ कटाके करते हैं, उससे कहते हैं हाँ जरूर मिलूंगा, काऊ सोना ना करी, काऊ सोना हाँ करी। किसी से कहते हैं नहीं मिलूंगा, और किसी से कहते हैं अभी आ रहा हूँ मिलने के लिए, और जिससे कहा है कि मैं अभी आ रहा हूँ वो तो इंतजार कर रही है, और जिससे कहा है मैं नहीं आऊंगा उसके घर सबसे पहले पहुंच गए।
बरकत तृणादि, जैसे बंदर जिस डाल पे बैठता है और दूसरी डाल से फल तोड़ता है, जिस डाल पर बैठता है और दूसरी पर फल तोड़ता है, तो जिससे कहा मैं अभी आ रहा हूँ, वो तो बेचारी इंतजार कर रही है, और जिससे कह दिया मैं नहीं आऊंगा, उसके घर पहले ही पहुंच गए, वो सोच रही है मेरे घर कब आएंगे, क्या करेंगे, उसके घर में पहले से जाके विराजमान हो गए। तो ये दोनों दृश्य जो है ये नंद भवन के दिखाई दिए। अब जो है कल आपका उत्सव मना महाराज के लिए, अपने अपने भाव आपने महाराज को, हम भी अपने भाव कह रहे हैं, मेरा राधा नाथ मुद्री का नगीना रहे। आप सब भक्त वृंद हैं, जैसे मुद्री होती है अंगूठी, और उसमें एक नगीना होता है, तो नगीना जो है बड़ा वैल्यूएबल होता है। तो हमारे राधानाथ जो है आप सब भक्त वृंदों की मुद्री है, और राधानाथ जी जो है वो हमारे नगीना है। आपने अपने अपने हृदय के उद्गार प्रकट किए। कल पुस्तक में भी लिखा, मैंने सुना एक पुस्तक छपी महाराज के लिए, और हमारी तो पुस्तक लायक भाव नहीं है, लेकिन हम तो ये कहते हैं वो नगीना है, हमारे नेत्रों की ज्योति है, हमारे हृदय के अगाध समुद्र में प्रेम के समुद्र है उनका। तो ये अब कुछ जो है ब्रज भक्तों के संबंध में बतलाएं आपको। ये जो है राधा गोपीनाथ जी, ये गोपीनाथ जी के भक्त में है संत दास जी, वहां के पुरी के, इनके घर में जो ठाकुर थे उनका नाम भी गोपीनाथ था। गोपीनाथ जी उनका ठाकुर जी की सेवा करते थे, और उन्होंने काफी परिश्रम से कुछ पैसा कमाया। उनकी इच्छा थी मैं ठाकुर जी को, जगन्नाथ जी के 56 भोग नित्य प्रति आते हैं, आज मैं भी अपने ठाकुर के 56 भोग अर्पण करूंगा। 56 भोग की उनकी इच्छा थी, और काफी श्रम करके उन्होंने जो एकत्रित द्रव्य किया, और जगन्नाथ जी के 56 भोग के जब दर्शन करके आए, तो जगन्नाथ जी को भी निमंत्रण दिया, आप भी हमारे घर जो है पधारिए और 56 भोग में प्रसाद पाइए। जगन्नाथ जी ने स्वीकार किया निमंत्रण, और उनके घर में गोपीनाथ जी के साथ में आ विराजे। उन्होंने जो पूरा प्रसाद लगाया वो, और जगन्नाथ जी को बड़ा रुचा, और उन्होंने खूब पाया। उन्होंने कहा जगन्नाथ जी आए हैं और कल चले जाएंगे। भाई अस्थि तो एक दिन का होता है, एक दिन का मेहमान और दूसरे दिन का बेईमान। जगन्नाथ जी आज पधारे चले जाएंगे, लेकिन दूसरे दिन भी जगन्नाथ जी उनके प्रेम को देख करके रुक गए। और वो क्या करें, उन पर कोई सामग्री नहीं। दूसरे दिन जगन्नाथ जी तो 56 भोग आरोप थे, उनके लिए 56 भोग कहाँ से लाए। खैर उन्होंने अपना जो घर था वो बेच दिया, और घर को बेच दिया, तो दूसरे दिन जो बहुत ज्यादा भोग लगा जगन्नाथ जी का, जगन्नाथ जी ने उसको भी खूब पाया प्रेम से। उनके प्रेम को देख करके जगन्नाथ जी फिर रुक गए, और तीसरे दिन जो है वो बड़ा उनके प्रॉब्लम आई, क्या करें। तो उनके पास में जितने भी बर्तन थे, वस्त्र थे, और जो कुछ भी उनके पत्नी के बच्चों के जो कुछ भी सामग्री थी, वो सबको बेच दिया उन्होंने, और जगन्नाथ जी के लिए फिर आयोजन किया। उस दिन जो है उतना भोग नहीं लगा सके वो, और जगन्नाथ जी उस दिन पूरे भोग को खा गए, बिल्कुल नहीं छोड़ा। अब जो है उन्होंने निवेदन किया, महाराज अब तो मेरे पास कुछ नहीं, आप तो सीधे सीधे में पधारो ठंडे ठंडे में, और धूप हो जाएगी, क्यों देर करते हो। जगन्नाथ जी बोले भाई मैं तो तुम्हारे यहाँ आ गया, अब तो कहीं जाऊंगा नहीं मैं, अब तो तुम्हारी इच्छा है, चाहे मुझे भूखा मारो, चाहे मुझे कुछ खिलाओ। तो बल्कि मैं 56 भोग कहाँ से लाऊं, और इसके इंतजाम में कर देता हूँ। तो उन्होंने जो स्वप्न दिया राजा के लिए, उन्होंने कहा मैं संत दास जी के यहाँ रह रहा हूँ, और इनके यहाँ पे भोग राग की व्यवस्था करो तत्काल। तो उन्होंने जो भोग राग की तब पूरी व्यवस्था की, और संत दास जी के घर में नित्य प्रति 56 भोग खाते रहे। ये है राधा गोपीनाथ जी के भक्त संत दास जी। दूसरे भक्त हैं राधा मदन मोहन जी के भक्त, उनका नाम था सूरदास मदन मोहन। सूरदास मदन मोहन, नाम सूरदास अलग है और मदन मोहन अलग है, लेकिन ये इस तरह से है जैसे आपने नाम सुना हो अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार एक नहीं है,
लेकिन एक से प्रतीत होते हैं, एक जैसी वो है। देव गांव के वैद्य हैं अश्विनी कुमार। तो ये जो थे, इनका नाम था सूरध्वज और इनके गुरु महाराज ने नाम दिया था सूरदास। ये ब्लाइंड नहीं थे, अंधे नहीं थे। इनके नेत्र जो थे बड़े कमल की तरह से खिले हुए थे, दिव्य ललाट था, चेहरा बड़ा सुंदर था, बड़े दिव्य बपू था, बड़े सुंदर थे। लेकिन इनका नाम जो सूरदास दिया, एक बार ये कविता कर रहे थे तो अपने भावों को व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। रात्रि में जब शयन किया तो स्वयं मदन मोहन जी ने आकर के वो कविता जो थी पूरी की, और कविता में जो भोग लगाया जाता है, कवि का नाम लिखा जाता है, उसकी जगह पर नाम दोनों का लिख दिया, सूरदास मदन मोहन। तो उस दिन से इन्होंने जो जितनी भी कविताएं लिखी उस सब में बिल्कुल अभेद्य हो गए। सूरदास और मदन मोहन एक हो गए मिलकर के। सूरदास मदन मोहन जितने भी हैं, ये सब जिनकी कविताएं जो है वो सूरदास मदन मोहन के नाम से विख्यात हुई। हर समय सेवा करते थे भगवान की, 24 घंटे उनकी संतों की सेवा में रहते थे, और ऐसे वैसे नहीं थे, ये अमीन थे। सड़ीले एक जगह है, सड़ीले हरदोई जिला है लखनऊ के पास में। अकबर राजा के ये वो थे, और वहाँ अकबर राजा की मुद्रा बनती थी, जो होता है ना टकसाल जिसको बोलते हैं, यहाँ रुपए पैसे जो गढ़े जाते हैं, बनाए जाते हैं, तो उसके अमीन थे। वहाँ इनकी देख रेख में ही सब द्रव्य बनता था, मुद्राएं बनती थी। तो एक बार ये बाजार में निकल करके जा रहे थे तो बड़ी जिद्दी थे ये, तो वहाँ गुड़ बिक रहा था, गुड़। तो हरदोई का गुड़, उधर का जो गुड़ है वो थोड़ा मशहूर होता है यूपी में, उसके पुआ बहुत बढ़िया बनते हैं। तो इनके मन में आई इस गुड़ को खरीद लो और मदन मोहन जी के लिए भेजा जाए, तो मदन मोहन जी जो है गुड़ के पुआ खाएंगे। जब बाजार में गए तो उनको पागल समझते थे सब लोग। भगवान के उसमें हर समय लीला में चिंतन में रहते थे, तो जो कुछ मांग लेता था उतने ही पैसे दे देते थे। तो इनसे जब गुड़ के दाम पूछे गए तो गुड़ वाले ने 20 गुने दाम बताए। मान लीजिए 1 रुपया किलो का गुड़ आ रहा है तो 20 रुपया किलो बताया इनको। तो उससे थे खजांची है, इनको पैसे की तो कोई कमी है नहीं। तो इन्होंने जब बताया इनके लिए 20 गुना, तो इन्होंने जो है कई गाड़ी, छकड़ा बोलते हैं गाड़ी को, इन्होंने गुड़ खरीद लिया और सबको जो है भेज दिया मदन मोहन जी के लिए, वृंदावन के लिए। गुड़ आया वहां पर और सब कहते थे देखिए अकबर के राजा के द्रव्य को पता नहीं कैसे कैसे द्रव्य ये है, उसको सबको लुटा रहे हैं ये। और इधर मदन मोहन जी बाट देख रहे थे, तो उसकी गुड़ आ रहा है मेरे लिए, मैं पुआ खाऊंगा। गुड़ आया वृंदावन में रात्रि में 11 बजे 12 बजे के लगभग आया। गुड़ जो बनता है वो जाड़ों में बनता है, तो जाड़ों में 12 बजे आप अंदाज लगा लीजिए कितनी ठंड पड़ेगी। और मदन मोहन जी के नेत्र जो थे वो सूझ गए बाट देखते देखते। 4 दिन में गुड़ आया, 4 दिन लगते थे गाड़ियों में, बैलगाड़ी में आकर के। तो मदन मोहन जी ने अपने सेवकों को जगाया सबको, और उनसे कहा कि भाई देखिए सूरदास मदन मोहन जी ने जो है गुड़ भेजा है, उसके पुआ बनाओ अभी। तो बोले महाराज अब रात्रि है, ठंड लग रही है, सुबह बना देंगे, कोई बात नहीं है। बोले सुबह तो भंडारी जो है इस गुड़ को जमा कर लेगा और पुराने गुड़ में से बना देगा। ये मंदिरों के जो अधिकारी होते हैं उनकी आदत होती है नए नए को जोड़ो, पुराने को खर्च करो। तो उन्होंने ठाकुर जी नहीं माने, और हमारे ब्रजवासी लोग तो ऐसा भी कहते हैं ठाकुर जी स्वयं पुआ बनाने में जुट गए। खूब पुआ बनाए और रात्रि में मदन मोहन जी ने भोग लगाया। मदन मोहन जी ने भोग लगाया। ये ऐसे मतलब कृपा पात्र थे मदन मोहन जी के, सूरदास मदन मोहन जी। एक बार जो है संतों की पंगत जा रही थी कहीं, बहुत सारे साधु संत थे, और अकबर राजा का फरमान पहुंचा कि जो 13 लाख हमारे लिए मुद्रा भेजी जाए, 13 लाख जो है मुद्रा भेजी जाए। और इन्होंने साधुओं को रोक लिया, वो 13 लाख जो थे वो साधुओं में खर्च कर दिए। और जब दोबारा फरमान गया भी 13 लाख रुपए नहीं आए हैं तो उसको भेजिए, तो उन्होंने संदूक मंगाई और संदूकों में पत्थर भर दिए और उसमें एक दुआ लिख करके भेज दिया, 13 लाख सड़ीले आए संतर मिल गटके और सूरदास मदन मोहन आधी रात को वृंदावन सटके। ऐसा है, उसमें लिखा है इन्होंने सड़ीले, उस मुद्रा का नाम था सड़ीले। सड़ीले में जो बनती थी उस द्रव्य को कहते थे सड़ीला। जैसे रुपया ठंडी तो सड़ीला कहलाता था। तो 13 लाख सड़ीले आए
और सब संतन मिल घटके, घटके का मतलब है खा गए संत लोग मिल करके। और सूरदास मदन मोहन आधी रात को वृंदावन को सटक गए, वृंदावन के लिए चल दिए ये। अब जब फरमान पहुंचा वहां पर, जब देखा ऐसा तो पत्थर भरे हुए, जब अकबर ने वो पढ़ा तो बोले ये तो ठीक है संतन मिल सटके, लेकिन ये क्यों घटके? नहीं, संतन मिल घटके, लेकिन ये क्यों सटके? ये सटक क्यों गए क्यों ये? अकबर राजा ने उनको बुलाया, लेकिन जब वृंदावन में आ गए तो उन्होंने कहा हमने जो है वृंदावन की रज को छोड़ करके नहीं जाऊंगा। अकबर ने माफी भी कर दिया, इनको कोई बात नहीं है, लेकिन उनका एक नवरत्नों में था टोडरमल, वो बड़ा ऐसा था अनुशासन प्रिय। उन्होंने कहा आज इन्होंने 13 लाख खर्च किए, कल कोई दूसरा भी कोई नवाब ऐसा हो सकता है जो खा जाए हमारे धन को, तो इनको जो है पकड़वा करके मंगवा लिया इनको। और एक दस्तम खां नाम का एक जेलर था, दस्तम खां, और उसके सुपुर्द कर दिया। वो इनको रात्रि में पेड़ से बांध करके मार लगाता था, और कहते हैं कि गरम तेल करके, गरम तेल जैसे कढ़ाई में करते हैं, और उनके ऊपर जो डालता था, तो कितना कष्ट इनको दिया। तो उनको जब ज्यादा कष्ट हुआ तो इन्होंने एक दोहा लिख करके भेजा अकबर के पास में, और उसमें कहा एक तम, हम कहते हैं अंधकार को, एक तम जब संसार में व्यापता है तो पूरा संसार जो अंधकार में हो जाता है, लेकिन ये तो दस्तम है, उसका नाम था दस्तम। तो ये दस्तम से मेरी रक्षा करो अकबर, जनमणि अकबर शाह, जनमणि कहते हैं सूर्य को, तो अकबर को सूर्य करके उन्होंने कहा कि आप जो है इस दुष्ट से मेरी रक्षा करने में समर्थ हैं। यानी इस तरह से लिखा उन्होंने, यक तम, यक माने एक तम, उसके ऊपर में एक शून्य दीजिए, तो एक के ऊपर में शून्य देंगे तो 10 हो जाएगा, 2 शून्य देंगे तो 100 हो जाएगा, तो यक तम शून्य दिए इस तरह से। तो ये तो संसार को अंधेरे में व्याप्त कर देता है, और इसमें तो दस्तम है जो मुझे कष्ट दे रहा है, इसको आप जो दूर कीजिए। अकबर ने जब उनको बुलाया, उनको जो मुक्त कर दिया, और ये वृंदावन आए। वृंदावन में जब आए तो फिर राधा कृष्ण की लीलाओं में हर समय लीला करते थे, चिंतन करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि ये अपनी लीला में मस्त थे, तो मथुरा में केशव राय जी का मंदिर है, केशव देव जी का मंदिर जन्मभूमि पर, वहां पर चोरी हो गई उनकी, केशव राय जी की। पूरा जो है उनका वस्त्र आभूषण जो थे सब चोरा करके चोर ले गए। तो इन्होंने सुना तो इनके अंदर जो है एकदम से आवेश आ गया, और इन्होंने कहा कि भाई ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जो चौकरा गंजे हैं, चोरों के जो सरदार है, उनकी चोरी कौन कर सकता है। तो कोई बरसाने की गए होंगे ये अपनी ससुराल में, और वहां पर किसी गोपी ने मनोविनोद के लिए कोई आभूषण इत्यादि के दर कर दिए होंगे। तो उन्होंने बड़ा सुंदर पद इन्होंने गाए उस समय के। ऐसे थे मदन मोहन जी, सूरदास मदन मोहन जी। राधा गोपीनाथ के भक्तों के मध्य में, राधानाथ जी के सानिध्य में कुछ थोड़े से भक्तों के उद्गार जो थे वो हमने प्रस्तुत किए। हमारे पूज्यपाद नरसिंहदास जी हमारे मध्य में हैं। एक बार हम और ये दोनों पहले भी यहाँ पर जुगल जोड़ी से विराजमान हो चुके हैं और आज हमारे महाराज जी आज जो है, आज आपको फिर कुछ ना कुछ जो है बड़ी सरस लीला सुनाएंगे, भजन सुनाएंगे। तो आपका ज्यादा हम समय नहीं लेंगे और आप सबसे आज्ञा लेंगे। श्री राधे, श्री नंदलाल की जय। हरि बोल। आजा महाराज, कहाँ चले गए, कहाँ चले आप? श्री राधे।
केवल 15 मिनट का समय है, इसलिए कुछ गाने से पहले या कुछ बोलने से पहले जो बोला जाता है वो मैं कुछ नहीं बोल रहा। केवल आप एक बार जय जय श्री राधे बोलें, जय जय श्री राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरु। इस माइक को थोड़ा आगे बढ़ा दो। मूरख छाड़ वृथा अभिमान, ये जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, ये सब हम ही लोगों के लिए बनाए गए हैं। महापुरुषों ने बड़ी बड़ी इस मन के ऊपर चोट करी है। मूरख छाड़ वृथा अभिमान, अवसर बीत चलो अब तेरो, तू 2 दिन को मेहमान। किसी को क्या पता हमारा जीवन कब समाप्त होने वाला है। हम 2-3 दिन से भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में हम भी भर्ती थे। हमारे घुटने का ऑपरेशन हुआ, इसीलिए इस तरह बैठना पड़ रहा है। हमारे सामने के कमरे में एक भक्त हैं, वो स्तोक कृष्ण, जिनको कैंसर हुआ है। उनसे मिलने जाते थे हम भी। उनको देख देख के ऐसा लगता था इस जीवन का क्या भरोसा है। उनको क्या पता था कि ऐसा होने वाला है। हमारे साथ क्या होगा, भविष्य में क्या होना है, किसी को कुछ पता नहीं। जो होने वाला है और जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते, उसको वर्तमान में ही जानने की कोशिश करना चाहिए कि भविष्य में क्या होने वाला है। मूरख छाड़ वृथा अभिमान, अवसर बीत चलो अब तेरो, तू 2 दिन को मेहमान। भूप अनेक भये पृथ्वी पर, रूप तेज बलवान। वृथा अभिमान क्या है? 2 तरह का अभिमान होता है। एक अभिमान होता है हम भगवान के दास हैं, ये भी तो अभिमान है। क्या ये अभिमान नहीं है? क्योंकि इसके साथ मैं जुड़ा हुआ है, मैं भगवान का दास हूँ, ये भी अभिमान है। पर ये अभिमान जरूरी है, ये होना चाहिए। तुलसीदास जी ने कहा है, अस अभिमान जाय जनि भोरे, और मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ऐसा अभिमान तो हमेशा रहना चाहिए कि हम भगवान के हैं, भगवान मेरे स्वामी हैं। और वृथा अभिमान क्या है? भूप अनेक भये पृथ्वी पर, बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, वो सोचते हैं कि हम इस धरती के मालिक हैं। ये वृथा अभिमान है।
कोई रूपवान है, वो सोचता है मेरे जैसा कोई सुंदर नहीं, ये वृथाभिमान है। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई बलवान है, जो भी है, जिसके पास जो संसारिक उपलब्धियां हैं और उनका वो जो गर्व करता है, ये वृथाभिमान है, ये नहीं होना चाहिए। उस अभिमान को प्राप्त करने के लिए ये अभिमान छोड़ना पड़ेगा। भगवान का दास बनने के लिए ये अभिमान छोड़ना पड़ेगा। रूप अनेक भये पृथ्वी पर, रूप तेज बलवान। बड़े बड़े एक से एक सुंदर, एक से एक बलवान, एक से एक धनवान हुए, पर कौन बचो या काल बली से मिट गए नाम निशान। धवल धाम धन गज रथ सेना। जिस समय ये पद बनाया होगा महापुरुषों ने, उस समय मर्सिडी गाड़ियां नहीं होंगी। उस समय राजा महाराजाओं के पास हाथी हुआ करते थे, घोड़े होते थे, सेनाएं होती थी, तो उसी का वर्णन किया गया है। धवल धाम धन गज रथ सेना, तेरी नारी चंद्र समान। एक दिना सब ही को तज कर, जाए बस्यो शमशान। वो अंतिम यात्रा है। तज सत्संग भ्रमत विषयन में, सत्संग को छोड़ के विषयों में घूमता है। कैसे घूमता है? जा विधि मरकट श्वान, कुत्ता और बंदर की तरह रात दिन विषयों में घूमता है। क्षण भर बैठना सुमिरन कीनो, जासो होय कल्याण। अब भी रे मन मूढ़ अनत मत भटके, इधर उधर मत भटक। मेरी कही अब मान। क्या कहते हैं आप? नारायण ब्रजराज कुंवर सो। जो ब्रजराज कौन है? नंद बाबा। उनका कुंवर कौन? कृष्ण। नारायण ब्रजराज कुंवर सो, देग करो पहचान। उनसे थोड़ी पहचान बना लो, वो तुम्हें जानने लग जाए कि ये महाराज यहाँ हर संडे को इधर आते हैं। इतना वो जानने लग जाए तो काम बन जाएगा। बाकी दुनिया तुम्हें जानेगी ये इंजीनियर है, ये फलाने डॉक्टर साहब है, उससे कुछ काम नहीं बनने वाला, वहाँ मारे जाओगे। देख, आप सब बोलना, देख लिया। अभी बाद में आधी लाइन बोलना। अभी पहले देखो, पीछे बोलना, अभी नहीं देखा। देख लिया दुनिया का नजारा। अब बोलना, ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम ना हम किसी के न कोई हमारा। देख लिया, देख लिया, देख लिया दुनिया का नजारा। ना हम किसी के न कोई हमारा। कल परसों हमसे वहाँ किसी ने कहा आपका ऑपरेशन हुआ है और बरसाने से कोई फोन भी नहीं आया, किसी ने पूछा भी नहीं आपके लिए क्या हो रहा है। हमने कहा भाई अब इन बातों में क्या रखा है, हम तो मानते ही नहीं कोई हमारा है कि नहीं।
जो अपना है वो तो अपने साथ ही है। कोई फोन करके पूछेगा साहब क्या हाल है आपके, हमने कहा जा ठीक है या ठीक नहीं है, तो वो क्या करेगा। महाभारत में कहा गया है ऐसी जगह जाके प्राण छोड़ो जहाँ तुम्हें कोई पानी देने वाला भी नहीं हो, जहाँ कोई तुम्हें जानने वाला नहीं हो, जहाँ तुम्हें कोई पहचानने वाला नहीं हो, वहाँ केवल तुम्हें कृष्ण की याद आए और किसी की बदसूरत नहीं दिखाई दे। झूठी ये दुनिया, झूठी ये बातें, झूठी झूठी ये दुनिया, झूठी ये बातें, झूठे ये रिश्ते, झूठे ये नाते, झूठा है तेरा संसार सारा, झूठा है तेरा ना हम किसी के न कोई हमारा ना। देख लिया, देख लिया रे, देख लिया दुनिया का नजारा ना हम केवल भगवान हमारे हैं, संत हमारे हैं, भगवान के भक्त हमारे हैं, और कोई हमारा नहीं है। खूब अच्छी तरह आँख खोल खोल के देखो, विचार करो, आपको यही पता चलेगा कोई हमारा है नहीं। बहुतों को पता लग चुका है, बहुतों को लग जाएगा। एक गजल है, गजल। उलझ मत दिल बहारों से, बजाते रहिए। उलझ मत दिल बहारों से, बहारों का भरोसा क्या, बहारों का क्या भरोसा है। तमन्नाएं जो तेरी हैं, फवारे हैं ये सावन के, फवारे सूख जाते हैं, फवारों का भरोसा क्या। बड़े रंगीन गुब्बारे देख कर, रंगीन गुब्बारे हैं संसार में जो फूले हुए सब जगह, बड़े रंगीन गुब्बारे देख कर मत हो फिदा इन पर रे। गुब्बारे फूट जाते हैं, गुब्बारों का भरोसा क्या। गुब्बारे की कई दिन की जिंदगी होती है, इसलिए उनको मत पकड़ो, उधर मत देखो। क्या करें, तू चप्पू नाम का लेकर, चप्पू किसे कहते हैं, जिससे नौका चलाई जाती है। तू चप्पू भगवान नाम का लेकर, किनारों से किनारा कर, किनारों से किनारा कर, किनारों से दूर हट। ये जो किनारे तेने पकड़ रखे हैं ना, परिवार के,
मित्रों के, रिश्तेदारों के, ये सब किनारे छोड़ दे। तू चप्पू नाम का लेकर किनारों से किनारा कर। किनारे टूट जाते हैं, जब बाढ़ आती है तो नदी के किनारे टूटते हैं, इसलिए किनारों का भरोसा क्या, देख लिया दुनिया का नजारा, ना हम किसी के, सब बोलो, ना हम। पंद्रह मिनट तो हो गए। 2 दिन के नातों को नाता कहे क्या, 2 दिन के, ये 2-2 दिन के नाते हैं और भगवान से हमारा सनातन नाता है। यहाँ आने से पहले भी था, मरने के बाद भी रहेगा, अब भी है, पर हम उसको मानते नहीं। 2 दिन के नातों को नाता कहे क्या, 2 दिन के, और 2 दिन के भाई को भाता कहे क्या। एक दिन हो जाना सबने नियारा, अलग अलग जाना है मर के, एक दिन हो जाना, चाहे जिंदगी भर साथ साथ रहो। अब वो जो बिचारी उनकी पत्नी है, उन भक्त की जिनको कैंसर हुआ है, उनसे कोई पूछता है तो यही कहेंगे हमारे पति हैं। एक विचार करने की बात है। पति का मतलब होता है पाति, पति जो चारों तरफ से रक्षा करता हो। अब जो अपनी ही रक्षा नहीं कर पा रहा है, हम सब लोग, हम अपनी ही रक्षा नहीं कर सकते, फिर पत्नी की क्या रक्षा कर सकते हैं। इसलिए पति शब्द केवल भगवान पे घटित होता है। ये हार्ड मास के पुतले पे पति शब्द घटित नहीं होता, पूरी तरह से सही नहीं बैठता। पति तो केवल भगवान ही है। हम लोग तो भोगी हैं, स्वार्थ के लिए बन जाते हैं पति, रक्षा नहीं कर सकते। जो रक्षा नहीं कर सकता वो पति नहीं हो सकता। एक दिन हो जाना सबने नियारा, ना हम किसी के कोई हमारा, ना हम किसी, देख लिया ना हम किसी के, न कोई हमारा नाम। किसी ने कहा आप कहते तो ठीक हो, ये बात हमारी भी समझ में आती है, हम भी जानते हैं इस बात को कि दुनिया में कोई किसी का नहीं। आप कोई नई बात नहीं बता रहे, हमारी समझ में आती है। परंतु बड़े मीठे बनकर जुबा खोलते हैं, बड़े मीठे, बोलो। ये महाराज, ये माया बड़ी सूक्ष्म है भगवान की। ये दुनिया वाले ऐसे मीठे बोलते हैं तो वो घुसे ही चले जाते हैं दिल में जबरदस्ती, इतने मीठे बोलते हैं। छोटा बच्चा जाके घर में जाता है, जब दिन भर काम करके आदमी, और बच्चा जब गोद में बैठता है 2 साल का, पिताजी की दाढ़ी पे हाथ फेरता है तो क्या लगता है? इसके अलावा कोई सत्य नहीं।
ये भगवान की माया है। ये प्रहलाद जी ने लिखा है, प्रहलाद जी ने भागवत में कहा है, वो जो मीठी मीठी तोतली तोतली बोली से बोलता है बालक, उस समय उस जीव का वो हरण कर लेता है। वो ममता उसकी ऐसी होती है, वो पिता राम भूल जाते हैं सब कुछ। ये गृहस्थी का बड़ा चक्कर है। बड़े मीठे बनकर जुबा खोलते हैं, बड़े और झूठे ही कहते हैं क्या, तुम्हारे हैं हम प्रेम से बोलते हैं, तुम्हारे हैं हम प्रेम से। ऐसे में क्या करें, ऐसे में क्या होता है, खा जाता है दिल धोखा हमारा, खा जाता है दिल धोखा, पर ना हम किसी के कोई हमारा। देख लिया दुनिया का नजारा, न जाने कितने जन्मों से देखते आ रहे हैं, अभी कोई नई बात थोड़ी है। पहली पहली बार नहीं आए बम्बई में, हजारों बार मर गए आ गए यहाँ पे, पता नहीं है। देख लिया ये दुनिया का नजारा, ना हम आखिरी लाइन है भजन की, ये माया का चक्कर है सबसे निराला, माया ये माया का चक्कर है सबसे निराला, ये माया का मरकर ही छूटे यहाँ फंसने वाला, मरकर ही। इसका क्या मतलब, फिर तो कोई छूटेगा ही नहीं। या वो छूटे जिसने, या वो छूटे जिसने हरि को पुकारा, या वो छूटे जिसने हरि को पुकारा, ना हम ना हम किसी के, ना हम किसी के, न कोई हमारा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। वही हमारे, बाकी कोई नहीं है। It is late, but we have nothing else except kirtan.
For 10 minutes we will dance.